of last week. On 19th March, the Honourable Speaker Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajan, released the book titled Indian Parliamentary Diplomacy, Speaker's Perspective, authored by Srimati Meira Kumar, former Lok Sabha Speaker, in the Rashtrapati Bhawan, and the first copy was presented to the Honourable President Shri Pranab Mukherjee. We bring you the high points of the book release function. The book was released by the Honourable Lok Sabha Speaker Srimati Sumitra Mahajan, and its first copy was presented to the Honourable President Shri Pranab Mukherjee at a function held in Rashtrapati Bhawan, New Delhi. The book features an account of the parliamentary diplomacy and its role in furthering foreign policy and strengthening international relations. It is also a collection of select speeches and reports by Srimati Meira Kumar during her stint as Lok Sabha Speaker and as a leader of Indian parliamentary delegations at several international fora. Indian Parliament has an almost infinite canvas to work on, domestically and internationally. While the work it does in the magnificent red stone building is always much talked about, but little is known about its performance in the international arena. I therefore felt the need to write this book. Parliamentary diplomacy is a beautiful and fine art of a parliament engaging fruitfully with other parliaments. It has come of age throughout the world, and in India also. It is increasingly becoming a very effective instrument of statecraft. It is conducted by the Speaker, who is central to parliamentary diplomacy, and it is the institution of Speaker which represents our Parliament in bilateral and multilateral fora, accompanied by members of Parliament from Rajya Sabha and Lok Sabha. Diplomacy is conducted mainly through talks or speeches. Talks are confined or restricted to a few people. They are closed door. Mostly they are confidential. And it is a process where the speeches are in the public domain. They are definite and they have a finality to them. That is why I have included the speeches. इतने बड़े लोकतंत्र की, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की स्पीकर, अध्यक्ष जब बाहर के देशों में जाती है विभिन्न कार्यक्रमों में, चाहे वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग हो, आईपीयू की मीटिंग, अलग अलग इसमें, या मिलने के लिए जाते हैं, अपने साथियों को लेकर के डेलीगेशन के रूप में जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग हमारे तरफ इस तरीके से देखते हैं कि इतना बड़ा देश जिसका आज महत्व है पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अगर देखो तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो या डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, दोनों दृष्टि से हिंदुस्तान का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे में जब हिंदुस्तान का लोकसभा का अध्यक्ष वहाँ जाता है तो एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। वो क्या बोलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, अलग अलग डेलीगेशन को कैसे मिलते हैं। किसी कमेटी की मीटिंग में जाओ तो वहाँ भी अलग अलग देशों के लोग आते हैं, दूसरे स्पीकर्स आते हैं, तो उनको किस तरीके से मिलते हैं, किससे ज़्यादा हंस के बात करते हैं, तो उसका भी एक अर्थ लिया जाता है। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। और इसलिए कहाँ हम क्या क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ऐसा मुझे भी लगता है। और इसलिए ये इस किताब का अपना एक महत्व है कि जब हम बाहर जाते हैं अनेक देशों में,
और वहाँ जब उस फोरम पे हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिप्लोमेसी हमारी है देश की, तो विदेश मंत्रालय हो, विदेश मंत्री हो, हमारे राजनयिक हो, वो अपने तरीके से कार्यपालिका बात करती ही रहती है, हम उसको सप्लीमेंट भी करते हैं और कहीं ना कहीं एक उसको बलस्थान देते हैं। ऐसा मुझे लगा कि वो जो बात हम करते हैं उस भाषणों का अपना एक महत्व रहता है। क्या बोल रहे हो आप, किस विषय पे, आपके साथ जो डेलीगेशन भी जाता है वो डेलीगेशन भी जिस तरीके से बोलेगा, अलग अलग कमेटियों में जाते हैं लोग हमारे और वो बोलते हैं, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व रहता है और उन देशों से हमारे रिश्ते मजबूत करने में, उसको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं स्पीकर की भी अपनी एक विदेश नीति को भी आगे बढ़ाने की, अनेक अनेक देशों से संबंध बढ़ाने की एक अपनी अलग भूमिका हो जाती है। और इस दृष्टि से इन्होंने जो सभी उनके जो भाषण है, मुझे लगा कि ये पब्लिश होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं बाहर जाके ये लोगों के सामने। तो ये किताब एक प्रकार से आने वाले किसी विद्यार्थी के लिए भी अभ्यास का विषय बनेगी, रेफरेंस बुक। इट कैन बी एज ए रेफरेंस बुक ऑल्सो। जब आप बाहर जाओगी, कुछ बोलोगी, तो वहाँ पर आप अपने देश को, आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, सब पूरा डेलीगेशन जो जाता है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। और देश को रिप्रेजेंट करते हुए हम क्या करते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, इस किताब से वो बात कहीं ना कहीं सामने आएगी, समझेगी। और इसलिए इस किताब का लोकार्पण जो आज यहाँ पर हो रहा है, इसका अपना एक महत्व है। Speaker, as the custodian of the parliamentary rights and privileges and representing the highest panchayat of this country, there is no parallel. That more than 80 crores voters electing 543 members of Lok Sabha from snow-capped Himalaya to Cape Comorin, from Dwarka to Mizoram, each and every part of the country, each and every island of the country, having a representation in the house which is called Lok Sabha, and Speaker represents the spirit and aspirations of this vast multitude of people in their efforts to enter into the biggest socio-economic transformation through parliamentary democracy is itself a magnificent task. In your book, I found in all important 39 topics, which you have described in 7 chapters, and identifying the major international issues today which are worrying the entire community, not only the diplomatic world, but the very existence of the human beings, of the societies, part of civilizations, environment and climate change, international peace and security, financial crisis. It may not be true to say that balance of power is the key to the foreign policy. It may be balance of payment has assumed more importance than balance of power, but nonetheless, the financial crisis, which are crippling the 85 least developed countries of the world, the climate change, which are challenging the very existence of the island countries, starting from Caribbean islands to Pacific islands, are not merely theoretical proposition, but the serious challenges to the collective wisdom of international community to find a solution.